is now presentable, right? So first of all, we talked about financial management. What exactly is financial management? We started our introduction to financial management, right? इसके बाद हमने बात की financial management के बारे में. What exactly financial management is concerned with acquisition, financing of resources, asset management, assets management with some objective. The definition might be a little vague in nature. अभी मैं आपको इस concept बता रहा हूँ यहाँ से. With some objectives. आप अपने हिसाब से definition relate कर सकते हैं because definition यानी वो same रहना चाहिए. What is the underline of this definition? Definition: financial management basically concerned with acquisition, financing, investing of the financial or the asset management with some objectives. What can be the some objective? इसके बारे में हमने last class में बात की. हमने बात की what can be some objectives. मैंने आपको ये बताया some objectives. Objective can फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. देखिए मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई टॉक अबाउट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने फाइनेंस को क्यों मैनेज कर रहे हैं. वन कैन बी द मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट व्हिच कैन ट्रांसलेटेड इनटू इंक्रीजिंग एनपीएस, increases EPS, increasing earning per share. And the second objective would be shareholders wealth maximization. Shareholders wealth maximization. सर जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज आल्सो नोन एज द इंक्रीजिंग व्हिच इज द इंप्रूव्ड वर्जन इज इंक्रीजिंग ईपीएस व्हिच इज अर्निंग पर शेयर. And we also looked into why EPS, why increasing EPS objective may not fully sound or may not very concrete objective of financial management. इसके बारे में हमने बात की. क्या क्या पॉइंट्स थे मैं आपको बहुत शॉर्ट में वो पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ. The very first point we talked about the limitation basically. इसकी जो problems के बारे में हमने बात की. It ignores the time value of money. It ignores TBM, which is the time value of money को consider नहीं करता. साथ में it does not consider into the risk factor. Risk factor, right? It does not consider the risk factor. साथ में हमने एक पॉइंट की बात की. जब मैंने रिस्क फैक्टर की बात की थी इसमें मैंने आपको बताया था बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी यू हैव टू लुक इनटू द वेरियस डिसीजन ऑफ द कंपनी. लाइक इन्वेस्टिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी, कोई कंपनी ने इन्वेस्ट कहाँ किया, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में किया, वेदर दे आर द रिस्की प्रोजेक्ट और दे आर अ मोर रिस्की प्रोजेक्ट और रिस्कियर प्रोजेक्ट और यू कैन से विद द. साथ में हम बात कर सकते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, हाउ दे रेज देयर कैपिटल, कैसा हाईली लीवरेज है, क्या वो बिजनेस अनलिक्विड बिजनेस है, क्या वो ऐसा बिजनेस है इसमें डेट बहुत ज्यादा है यानी कि डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है. यानी कि आपको ये सारे फैक्टर देखने होते हैं. बट व्हाट ईपीएस इंक्रीजिंग ईपीएस ऑब्जेक्टिव इग्नोर्स, इट इग्नोर ऑल दोस थिंग्स. यानी इंक्रीजिंग ईपीएस का मतलब ये है कि इफ यू आर ए लेमन इन्वेस्टर ऑल यू हैव टू जस्ट लुक एट द ईपीएस ऑफ द कंपनी. इफ द कंपनी इज ऑफरिंग यू वेरी गुड ईपीएस, इज द अर्निंग पर शेयर, देन यू शुड इन्वेस्ट. But it is a very wrong approach in share market, right? Yeah, in any market, not talking about the share market or capital market or the stock market, right? Excuse me, So, sir. Sir. Excuse me, sir. Sir, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार. I'm listening. Again. Yes, sir. अच्छा सबके साथ ऐसा ही है या? Yes, sir. ब्रेक हो रही है. But a second, I'm not very sure what's happening. Just give me a second again. Actually, I shifted to a new place in Dwarka. That's why there are some network issues in my place. मैं विंडो ओपन कर देता हूँ.
Is it fine now? Yes, sir. Okay, better. Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I repeat all these things? Sir, Yes. second point, Yes. risk factors. हाँ, देखिए जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग ईपीएस ऑब्जेक्टिव की तो कई बार क्या होता है जब आप ईपीएस को देखते हैं सिर्फ अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो सम टाइम द ईपीएस ऑब्जेक्टिव इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर. One company may possess a very high risk in their books, and the one company may have a little risk. जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, there are two companies and their investment composition are totally different. There's a one company which has a total exposure in F&O market, future and option market, derivatives में. One company it has a very huge exposure to the equity market. On the other hand, there's another company which has invested in government security or moderately less risky companies or less risky investment. So we can say अगर उनका EPS सेम है लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट कॉम्पोजिशन अलग है तो आपको देखना होगा. वो डिपेंड करता है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर. If you are a very risk lover investor, you can go for the company which has the highest exposure in the equity market. But one should shy away for with such kind of company if you are a risk averse in investors, right? तो रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रिस्क फैक्टर को एसेस करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है, कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है. फाइनेंसिंग डिसीजन, कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है. हो सकता है कंपनी ने डेट से सारा पैसा उठाया हो सकता है कंपनी ने डेट के साथ साथ में इक्विटी से भी पैसा उठाया है यानी आईपीओ इशू कर कर अपना, राइट. तो रिस्क फैक्टर्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यस और नो क्लास? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको इंक्रीजिंग ईपीएस में साथ में एक पीई रेशियो भी बताया था विच इज प्राइस अर्निंग रेशियो. यस, इसके बारे में हमने काफी Yes, sir. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखे थे. प्राइस अर्निंग रेशियो इज बेसिकली मोर इम्प्रूव और इट इज अ बेटर फाइनेंशियल रेशियो देन ईपीएस. ईपीएस ठीक है, आप ईपीएस देखिए बट ईपीएस के साथ आपको प्राइस अर्निंग रेशियो भी देखना पड़ेगा. अगर आपको याद ना होना कि कैसे याद किया जाता है, one is price and E is earning. It means share price of the company, share price divided by earning of the company, right? Which is the EPS. आप divide कर दीजिए, you will get the price earning ratio of the company. Price earning ratio क्या बताता है क्लास? कल ही हमने बात की थी price earning ratio. So valuation. Yes, it talks about the valuation of the company, whether the valuation is cheap, whether the valuation of the company is expensive, whether you should invest in a company or not. But again, if I say PE ratio in an industry of a company is lesser in comparison to their competitor, right? Its competitor. You cannot say that you should invest in a company because its valuation is cheaper. No, because there are other factors as well you should consider. इसके पीछे बहुत अच्छी थियरी है बट अभी मुझे इसका रेलेवेंस नहीं लगता फिलहाल. बताना चाहिए क्योंकि जब हम फाइनेंशियल रेशियोज करेंगे आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आपको बहुत ही डिटेल में कंपनियों के एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा कि क्यों पीई रेशियो में ब्लाइंड यू. P ratio sometimes may manipulate you and you might ended up investing in a company which has a very less growth orientation in future. Are you getting my point? अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए थंब रूल. जिस कंपनी का पीई रेशियो कम होता है उसके पीयर्स के कंपैरिजन में उस कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती होती है. बट आप ये नहीं कह सकते कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड पूरी तरह से है या उस कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. देयर आर ग्रोथ एज वेल. फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये मैं आपको नई चीज बता रहा हूँ आज की क्लास के. कंपनी ए एंड कंपनी बी. कंपनी ए हैज द पीई रेशियो 30. अभी जैसे मैं एक और आईपीओ देख रहा था, अभी क्लीन साइंस का आईपीओ आने वाला है ऑन 26 ऑफ जुलाई. तो आई एम आल्सो थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन दैट आईपीओ. तो मैं वहाँ पे पी रेशियो ही देख रहा था कंपनीज के. तो पी रेशियो से तो मुझे क्लियर लग रहा है कि हाँ कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है बट सिर्फ पीओ रेशियो देखकर लग रहा है. बट उसके साथ में मुझे कंपनीज की अर्निंग प्रोजेक्शंस देखनी पड़ेंगे, मुझे कंपनी की क्वार्टरली बेसिस के रिटर्न्स देखने पड़ेंगे. उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि क्या कंपनी सच में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या कंपनी की वैल्यूएशन चीपर है या एक्सपेंसिव. ठीक है, तो पी रेशियो 30 एंड दिस कंपनी हैज द पी रेशियो 50. अगर आप सिर्फ पी रेशियो देख आपको लगेगा कंपनी A has a lesser PE ratio, that's why you should invest in a company because this company has more potential and this company shares are undervalued. Yes, ये plain sided observation यही कहेगी. But at the same time earnings, what are the earning prospect of this company?
and this company, for example, if I talk about this company's earning prospects, past 3 years में इस कंपनी का जो अर्निंग है, अर्निंग प्रोजेक्शंस है, ग्रोथ है 10% in past 3 years, 15% and 22%. These are the earning growth. Right? On the other hand, there is other company जिसका PE ratio 50 है. It has 18%, 25% and 30% growth rate. Now, if you look at the growth rate, किस कंपनी का ग्रोथ ज्यादा है? The company which has a more PE ratio has a more growth projection, right? Revenue growth projection ज्यादा है. यानी कि अब आपका आंसर चेंज हो सकता है चेंज, राइट? क्योंकि जिस कंपनी की अर्निंग जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका पी रेशियो भी बाय द टाइम बाकी शेयर होल्डर्स के लिए इंक्रीज होगा. बट अगर आपने अभी इसी साल इन्वेस्ट कर लिया ऐसी कंपनी में तो आपका पी रेशियो कंपेरेटिवली कम होता रहेगा, क्योंकि आपने मान लीजिए शेयर बाय किया, इस कंपनी का शेयर प्राइस वॉज 100, आपने 100 पे शेयर बाय कर लिया. अब इस कंपनी का शेयर हो गया फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 3 ईयर हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज बोलिए कम से कम. आपको अगर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी. हेलो हेलो, यस सर, अब आ रही है आवाज. अच्छा आ रही है. मुझे किसी का कॉल आ रहा है ना, इसलिए शायद मेरा नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो रहा है. एनीवेज, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है? पी रेशो आप क्यों देखते हैं और पी रेशो के साथ आपको कौन से दूसरे स्टैट्स को देखना होगा इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर द कंपनीज वैल्यूएशन इज फाइन और नॉट, राइट? और वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट. ठीक है? Yes, sir. Yes, यस. sir. ओके फाइन, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. The last point which proves why EPS may not be the strongest objective of financial management. ठीक, EPS क्या बताता है आपको ये समझना होगा. अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है व्हाट EPS टेल्स अस. EPS इज अर्निंग पर शेयर, यानी हर एक शेयर पर आपकी कितनी अर्निंग होती है. यानी अगर आपके पास एक शेयर है, उस शेयर पर आप कितना अर्न कर लेते हो. ठीक है, दिस इज समथिंग EPS. EPS कैसे आप निकालेंगे? कंपनी की जो अर्निंग्स है, ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स अर्निंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. आफ्टर टैक्स अर्निंग, जब भी हम अर्निंग्स की बात करते हैं शेयर होल्डर्स अर्निंग की, वी ऑलवेज टॉक अबाउट पैट, व्हिच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. Sir, your voice is not audible. नेटवर्क इशू ही होगा, जैसे सर कह रहे थे ना. स्क्रीन इज आल्सो स्टक. हाँ. हेलो हेलो, So yes, your voice is disturbing and also not audible. actually I am getting a several call from someone and I don't know what's happening. Like, पता नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं आता. उनका कॉल एक बार अगर कोई कट कर रहा है इसका मतलब पर्सन माइट बी बिजी एंड आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम अननोन नंबर. सो वो नेटवर्क इशू हो जाता है व्हेन कॉल कम्स, वो नेट चला जाता है. अब क्लियर है? यस Yes, सर. sir. ओके फाइन. आई एम सॉरी फॉर दीज इनकन्वीनियंस. पता नहीं आज ही हो रहा है, वरना नॉर्मली मेरी क्लास में ऐसा होता नहीं है.
earnings divided by number of outstanding shares, we get the EPS. Now देखिए ईपीएस ऑब्जेक्टिव मान लीजिए एक फॉर्म है, उसके सीईओ एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पूरा अप्रोच है वो ईपीएस को इंक्रीज करने पे, इसको इंक्रीजिंग ईपीएस। अब ईपीएस कैसे इंक्रीज होगा? आप कह सकते हैं सर या तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर डिक्रीज हो जाए या अर्निंग्स इंक्रीज हो जाए। ऑब्वियसली द पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट द इंक्रीजिंग ईपीएस इज ऑलवेज व्हेन अर्निंग इंक्रीजेस। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कब डिक्रीज हो सकते हैं? व्हेन कंपनीज बाय बैक इट्स शेयर्स। यस, कंपनी अगर अपने शेयर्स को वापस मार्केट से बाय कर लेगी तभी कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिक्रीज होंगे। तो बेसिकली ईपीएस अगर इंक्रीज होना है किस सिचुएशन में हो सकता है? ओनली व्हेन द अर्निंग्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मान लीजिए अब सीईओ एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे हैव द ऑब्जेक्टिव दैट दे शुड इंक्रीज द ईपीएस ऑफ द कंपनी। अब उसके लिए यानी कि अर्निंग्स इंक्रीज होनी चाहिए। अब कंपनी की अर्निंग्स कैसे इंक्रीज होंगी? कंपनी की अर्निंग्स तब इंक्रीज होंगी व्हेन द कंपनी विल invest reinvest its profits, when company will reinvest its profits। कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया सारे ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में उसे इन्वेस्ट कर दिया। यस और नो? सीधे सीधा सा लॉजिक है ना? Yes, sir. यस, हेलो। हेलो। Yes, sir. सर वॉल्यूम बहुत कम है। Am I audible now? यस सर। Yes, sir. Okay, I'm so sorry because I don't know what's happening with it. Let it be. Fine. Okay, so we were talking about the EPS कि अगर कंपनी अपना EPS इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव रखती है तो कंपनी हमेशा क्या करेगी? अपनी सारी अर्निंग्स को ग्रोथ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगी। इसका मतलब ये है कि कंपनी बेसिकली यस। सर द स्क्रीन इज नॉट प्रेजेंटिंग। अच्छा, स्क्रीन सॉरी, एक सेकेंड। अब ठीक है? यस सर। Yes. Fine. यस So सर। basically, in such a situation, company what they will do, what company does, they will invest the entire they will reinvest their entire profit in the growth project. In such a situation, company will not pay the dividend. Company will pay no dividend. Company will pay no dividend. Yes. Obviously, जब कोई कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड होती है उसको सिर्फ ईपीएस रिफ्लेक्ट करना है। कंपनी की अर्निंग से मतलब है, उसको शेयर प्राइस से कोई मतलब नहीं है वेदर द शेयर प्राइस शुड इंक्रीज और नॉट। कंपनी को सिर्फ अर्निंग से मतलब है। तो ऑब्वियसली इन सच a सिचुएशन कंपनी विल ऑलवेज reinvest the entire profit in the growth project or any project whether they are the growth projects or not, right? In such a situation यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलने वाला है वो डिविडेंड भी हैम्पर हो रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जब हम बात करते हैं डिविडेंड
Why dividend is important to the shareholder? It is one of the most important things shareholder always consider when they invest in a company. Even when I invest in any company, I always consider whether this company pays the dividend or not. If company is paying less dividend or no dividend at all, I normally do not invest in that company. It is known as a clientele effect basically. ये financial management में एक theory है clientele effect. वो theory ये कहती है कि आप जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उस कंपनी में वैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो उसकी डिविडेंड अप्रोच होती है. फॉर एग्जांपल, इफ आई नीड मोर एंड मोर डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, आई विल इन्वेस्ट माय मनी इन दैट कंपनी ओनली which pays the handsome dividend, right? I would not invest in a company which pays less dividend or no dividend at all. ठीक है? I hope this idea is clear, class. Yes. Yes, sir. राइट. तो अभी हमें ये पता लगा कि जो ईपीएस ऑब्जेक्टिव है, व्हाई ईपीएस ऑब्जेक्टिव मे नॉट बी सबस्टेंशियल बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस. फर्स्ट रीजन वाज इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. There are two projects. One project offers you 10 crore rupees of inflows. Second project offers you 100 crore rupees of inflows. But you cannot decide because of the time value. 10 करोड़ आएंगे आपके पास 2 साल में inflows. 100 करोड़ आने वाले आपके पास 15 साल में. Obviously, the time are not same. And if you have to equate the time, you should consider the inflation as well as the interest. इसके बारे में हमने कल डिटेल में बात की. साथ में हमने बात की risk factor. Yes, risk factor plays a very important role. Some project might be risky and some project might not be very risky, right? The second thing. Third thing, if a company is following the increasing EPS objective, the company tends to pay no dividend at all. But dividend payment is very important decision factor whenever a person invests in a company. तो बेसिकली हमें ये पता लगा, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और द इंक्रीजिंग ईपीएस may not be substantial financial management objective, you have to justify, you have to explain all these points with these examples. Fine. अब हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, which is shareholders wealth maximization objective. What is this shareholders wealth maximization objective? First, Sir, I have a doubt. हाँ जी बोलिए. Sir, in certain case, like recently, Infosys had done a buyback of shares. Yes. So, if we see it, it can be also in positive perspective. Like open market buy offer tha Infosys ka, and from investors' point of view only, I'm saying people are seeing it in a good way. Like promoter is increasing their shareholding in the market. So it can also be seen as a good sign. देखो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है बायबैक के ऊपर. बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट द बायबैक, what is the buyback? Buyback is when company buy back its share and they return off the shares, right? They return off their shares, they just cut it down the share from their paid up capital. ठीक है? Yes. Yes, sir. ठीक है. अब बायबैक का एक कंटेंट थ्योरी होती है, या आप इसे सिग्नलिंग थ्योरी कह सकते हैं, कि whenever company does the buyback, what signals it offers to the market. अभी इन्फोसिस ने किया था, टीसीएस ने किया था, अभी कुछ फर्म से लाइक हिंदुस्तान, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द फुल, जेपी मॉर्गन ने किया अमेरिका के अंदर बायबैक. तो बेसिकली बायबैक क्या इंडिकेट करता है? बायबैक किया कब जाता है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज बायबैक किया कब जाता है? एनी आइडिया व्हाई कंपनी डज द बायबैक? So company wants to increase their shareholding, like promoter shareholding. No, that's not the reason. Okay, then I'm not sure, sir. ओके. देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब कंपनी बाय करती है शेयर, इंडिया में बता रहा हूँ मैं आपको, एज पर सेबी रूल्स. इंडिया में क्या होता है, अगर कंपनी ने अपने शेयर्स लोगों से बाय कर लिए, उसको बाद में रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, यानी कि उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना पड़ता है. कंपनी की पेड अप कैपिटल सब्सटेंशियली डिक्रीज हो जाती है. इज दैट क्लियर? राइट. ठीक है. Yes, sir. हाँ. तो यहाँ पे प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग डायरेक्टली तो बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा. यस और नो? relatively increase हो सकता है, relatively increase हो सकता है, but that's not the case. Company always come up with a buyback when company feel that their share prices are undervalued. First thing, company comes up with a buyback when company has huge cash in their balance sheet, right? If you really want to understand the buyback concept in depth, there are two videos which I have already made. I taught the buyback scenario to the first year students. If you really need to understand, I can share you the link and you can go through those two videos. They will give you the very important perspective of the entire buyback theory, right? Okay, sir. हाँ.
दो वीडियोस आप देख लीजिए, आपको बायबैक का सारा आगे पीछे ए बी सी सब कुछ समझ आ जाएगा. बट बायबैक इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव न्यूज इन द मार्केट, एंड whenever buyback happens in the market, the share prices tend to increase. ठीक है. Now, Okay, sir. okay, fine. अब हम आगे चलते हैं. Yes. अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन, और आई एम गोइंग टू चेंज माय स्क्रीन. Shareholder wealth maximization objective. What is this objective? काफी इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है. डीयू में व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू टू जेएमसी, दिस इज मैरी कॉलेज. I also taught in JMC, SRCC, and that's my fourth college basically. In last 3.5 years, I was basically promoted to this college. तो मुझसे यहाँ पर भी इस कॉलेज में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को एक्सप्लेन करो. सेम क्वेश्चन मुझसे जेएमसी में भी पूछा गया था, व्हाट डज शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप या फाइनेंस के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी रिफ्लेक्ट्स. ठीक है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. Now, how the shareholders' wealth can be maximized? Any idea? For example, if you are an investor in a company, for example, I just bought the shares of Zomato. I got one lot in through IPO only, and I booked some pretty good profit yesterday. So, like abhi bhi I'm having some shares. I'm holding some shares of Zomato because I'm in like wait and watch situation. I will wait for a time and then I'll start whether I should exit from the market, or I should keep my investment in the Zomato, or I should look at the quarter next quarter result or the upcoming quarter result, right? So, for example, I am having 150 shares of Zomato. Now tell me how I can enhance my wealth if I'm a shareholder. बताइए, कोशिश कीजिए बताने की. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास 150 शेयर है जोमेटो के. अब मेरी शेयर होल्डर, मैं शेयर होल्डर, तो मेरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस तरह से हो सकती है? सर शेयर के सर प्राइसेस बढ़ जब जाए. कंपनी की ये अर्निंग ज्यादा हो या जाए. तो शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो या फिर मुझे डिविडेंड मिले. यस और Yes, नो? yes, देयर आर sir. टू वेज ओनली. आइदर आई शुड गेट द इंस्टेंट डिविडेंड, और आई शुड गेट, देखो नियर डिविडेंड होता है और एक होता है डिस्टेंट डिविडेंड, राइट? नियर डिविडेंड का मतलब जब कंपनी डिविडेंड ऑफर करती है. डिस्टेंट डिविडेंड का मतलब जब कंपनी शेयर प्राइसेस के थ्रू आपको कैपिटल गेन होता है. फॉर एग्जांपल 150 शेयर. अब मैंने जब शेयर इसका बाय किया था, जो मुझे अलॉट हुआ था एट ₹76, राइट? एज ऑफ नाउ द शेयर प्राइस इज अराउंड 126. The last traded price yesterday it was 126. Now, obviously, it's a 50 rupee gain within one day because it was allotted yesterday only. IPO का लिस्ट कल ही हुआ था. अब मेरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दो केसेस में हो सकती है. आइदर जोमेटो शुड pays a dividend, which is not possible in Zomato case. Reason, because Zomato is not a profit making company, it's a loss making company, right? तो मुझे यहाँ पे रिटर्न मिलने दो, मुझे डिविडेंड मिलने से तो रहा. All I can get, my wealth can be increased, my wealth can be maximized only by way of capital gain. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right? अब शेयर प्राइस जितना ज्यादा जाएगा, जैसे 138 भी गया था इसका शेयर प्राइस का. अब मैं इसी पोजीशन में हूँ कि इसके शेयर प्राइस अगर 200 के आसपास जाते हैं, ओनली देन आई शेयर दिस. अदरवाइज आई कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. नाउ, basically, when it comes to the shareholder wealth maximization, it is always considered through share prices. Yes. So share price of the company. Share price. What does share price reflect? My question is, what share price of any company reflect? What information share price conveys? बताइए.
The capital of the company divided into units. Okay, fine. Hmm. Anyone else? So market value of the company. Market value of the company. Okay, fine. देखो शेयर प्राइस क्या रिफ्लेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज हैं इस पर। ऑल्दो आपकी बुक में जो इंडियन ऑथर्स हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन ऑथर दे एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। व्हाट शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट? शेयर प्राइस ऑफ एनी कंपनी रिफ्लेक्ट्स all managerial decisions of the company. All managerial decisions. Share prices reflect all past, present, and future expectations. Past, present outcome or result, and future expectations. Share price reflects management capability. Management, how efficient the management of the company capability. Share price reflect all three dividend or all three decisions. Basically decision यही है, मैं इसको यहाँ पे explain कर रहा हूँ, which are investing decisions of a company, financing decision of a company, and dividend decision of a company. Every single share price does reflect. यानी कि शेयर प्राइस से आपको सब पता लगता है whether the share prices are increasing or not increasing, whether the share prices are decreasing, why share prices are decreasing, if any fraud erupts in any company or in subsidiary or the associate company of any company, their share prices started decreasing. Why? Because people see the share price as a barometer. शेयर प्राइस को हमेशा किसी भी कंपनी का बैरोमीटर माना जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है। और इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है जो आप अपनी मास्टर में पढ़ेंगे, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस? No, sir. कोई बात नहीं, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर एमकॉम फर्स्ट ईयर में सुना था, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये थियरी यही बताती है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या बताता है कि शेयर प्राइस क्या इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है। Share price सारी managerial decision, capabilities, past, present, future expectations, investing, financing, dividend decision, everything which is related to the company, it does reflect everything. That's why the share price considered as the true measurement of shareholders' wealth maximization. Am I clear, class? Yes. Yes, sir. Right. So, कई बार sometimes we wonder. For example, if you just look at the Zomato example, तो Zomato को 76 रुपी पे जोमेटो ने मुझे शेयर ऑफर किया। फॉर एग्जांपल इट वाज कट ऑफ प्राइस ऑफ जोमेटो, एंड जो जोमेटो का जो प्राइस आया 76 निकल कर आया। तो यानी कि जोमेटो को कितने रुपए के हिसाब से जोमेटो ने पैसा रेज किया है? 1 रुपीज प्लस 75। यू नो व्हाट इज दिस 1 रुपीज प्लस 75? 1 rupee premium. 1 रुपीज प्रीमियम। ओके, यस, यस, 1 रुपीज इज प्रीमियम एंड 75 is face value. Face value of share. रियल मार्केट में इस तरह से चीजें होती हैं। 1 रुपए का शेयर था, 75 इज द प्रीमियम। तत्व चिंतन। फेस वैल्यू 10 रुपए, आई थिंक 10 ही है, 2 रुपए थी, आई एम नॉट वेरी श्योर, 2 थी या 10 थी, अभी मैं देखकर बता सकता हूँ, बट इट वाज 10 रुपीज टू, दैट वाज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। एंड द प्राइस जिसपे मैंने कट ऑफ प्राइस जिसपे मैंने आईपीओ पे अभी अप्लाई किया था, दैट वाज 1070 कुछ, अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर 70 कुछ। नाउ लुक एट प्रीमियम कितना हुआ, around 1060 in least case 1060। रियल लाइफ की सिचुएशन पूरी अलग है।
आपको लगता होगा ना कि 1 रुपए का प्रीमियम है, 50 पैसा 1 रुपए का शेयर है, 50 पैसा प्रीमियम मंगवा लिया, 10 रुपए का शेयर है, 50 पैसा या 2 रुपए प्रीमियम मंगवा लिया। नो, ऐसा नहीं होता रियल मार्केट में। रियल मार्केट में कंपनी की वैल्यूएशन इसी बेस पे देखी जाती है कि भाई फेस वैल्यू कितनी है और कंपनी कितने पे अपना शेयर ऑफर कर रही है। दैट्स हाउ वी लुक एट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, whether the share of the company, the price at which the company is offering through IPO is expensive or not, right? Are you getting my point, class? समझ आ रहा है? Yes, sir. ऐसे केसेस होते हैं, कभी भी कंपनी का कई बार प्रीमियम होगा हजारों में, फेस वैल्यू होगी 10 रुपए शेयर की, कंपनी कर रही है because they know they may have the valuation, high valuation, that's why they are charging a very high premium of the share. That's how we look at the things, right? तो शेयर होल्डर्स, अब मैं आपको ये बता रहा था, कंपनी ने 1 रुपी प्लस 75 रेज किया, कंपनी को तो 75 प्लस 176 ही मिला ना, बट अगर 138 मार्केट में प्राइस चल रहा है, इससे कंपनी को क्या फायदा है? इसको देखो, कंपनी को कोई फायदा हो या ना हो, ये 138 कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल, ये जो सेकेंडरी मार्केट, ये मैं आपको प्राइमरी मार्केट का शेयर प्राइस बता रहा हूँ, लिस्टेड प्राइस, नॉट लिस्टेड प्राइस, इट वाज द ऑफर्ड प्राइस जिसपे शेयर अलॉट हुआ था। तो कंपनी ने 76 रुपीज मुझसे लिए, ठीक है। अब अगर कंपनी का प्राइस 138 है, इट शोज अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, it shows the financial situation of the company. Share prices always does that. Is that clear, class? And Yes. share price always discount every information, every single information. अगर कोविड हुआ, कोविड जैसे क्या हुआ था मार्च 2019 में, राइट, मार्च 2020, सॉरी, आप डियर प्राइम मिनिस्टर he announced that the country is going in lockdown and the share market plummet, right? Share market was plummet by around 50% that time. 50% से नीचे शेयर प्राइसेस गिर गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एवरी कंपनी शेयर प्राइस वो परमिट बाय 50%। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, उस वक्त सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर किसी ने उस वक्त 1 लाख रुपीस लगाए होते तो आज वो on an average 2 lakh के आसपास, यानी 100% within 1 year, right? Because thereafter the companies, they discount the information and they started working accordingly, right? अब मैं आपको कुछ examples देता हूँ। Let's talk about this in a real way. अच्छा, are you taking this class seriously or you're not getting things? Please let me know in case if you people are understanding the things which I'm teaching you. Yes, sir. Yes? Okay. Everyone? Miss Yes. Rachna, Payodi, Manish, Yes, sir. Yes, कार्तिक, sir. Everything is ओके, वेरी clear. गुड। देखिए, Yes, sir. मैं आपसे ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि आपको क्लासेस में कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स जरूर मिलेंगी, because I am not a very like very old or very senior experienced teacher. I'm just 26 of age and it's been just 3.5 years I'm teaching. But what I teach, I always teach the things which you should look at in the real world. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुक्स में तो सब कुछ पढ़ रहे हैं बट वो रियल वर्ल्ड से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसमें आपको एक शेयर प्राइस, लेट्स टॉक अबाउट अ शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी। यस बैंक, यस बैंक का शेयर प्राइस past 5 years. Can you see this? Yes bank share price. Yes, sir. Now look at the share price of the company here. It is around 382 rupees 85 paisa. It is a lifetime. It was the highest lifetime share price of the company, 382.85. Now the current price of the share of the company, 13 rupees 10 paisa, right? 13 रुपीज 10 पैसा। कहाँ से कहाँ पर? 400 रुपए के आसपास शेयर था, आज वो 13 रुपए में है। और मिनिमम में कितना गया था? 5 रुपए में चला गया था। यानी कि whatever happened in the company, there was a lot of corporate governance issues in the company. There was corruption charges on the chairman of the company and the CEO Rana Kapoor, right? And company was grossly engaged in the high class risky assets. यानी जो येस बैंक का क्या कर रहा था, काफी एग्रेसिवली जो कंपनीज थी जिनके फाइनेंशियल ज्यादा अच्छे नहीं थे उनको भी उन्होंने एग्रेसिवली क्या दिया, लोन्स दिए। तो ऑब्वियसली उनका एनपीए इंक्रीज हुआ। जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, आई होप यू कैन दिस लुक एट दिस, 393 रुपीज 17 ऑफ अगस्त 2018। यस,
Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि Yes. it is almost 400 rupees. सर 3 साल पहले 400 रुपए का शेयर था. And if you just closely observe within yes, within 1.5 month, the share prices is less than half. Within just 1.5 month. अब आप सोच सकते हैं सर ऐसा इस टाइम पीरियड में क्या हुआ होगा. In between this time period, 17th of August 2018 to 21st September 2018, there was an incident in a company. Company's CEO Rana Kapoor, this RBI. RBI has denied to give the extension to Rana Kapoor. राइट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सीईओ को क्या कहा, रिकमेंड किया आरबीआई को कि भाई इनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाए 2021 तक. But RBI clearly denied it because there was a lot of allegation on the Rana Kapoor. On Rana Kapoor, he was a founder also and he was a CEO at that time. तो उनका एक्सटेंशन नहीं दिया. अब मार्केट ने देखो इसको किस तरह से कंसीडर किया इस इंफॉर्मेशन को कि यानी कि कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, राइट. इसलिए लोगों ने यहाँ पे शेयर को क्या करना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया. So if the share price, which was all-time high at rupees around 400 rupees, if the share price goes down to rupees 5, which is the lowest share price of this company in entire its life, right? So you can assume that obviously there would have been something wrong in the company, right? There was a lot of corporate governance fault. There were a lot of corruption issues. That's why the share prices goes down. यानी कि आपको शेयर प्राइस देखकर ये पता लग सकता है, शेयर प्राइस हमेशा वो रिफ्लेक्ट करता है वो कंपनी की जो राइट वैल्यू होती है. अब देखिए शेयर प्राइसेस 13 रुपए के आसपास चल रहे हैं और काफी टाइम से यही शेयर प्राइस चल रहा है, काफी टाइम से. I know few of my not friends, they are the acquaintance. They had heavily invested in the share in this when the share price was around 300, and when they sold out the shares, तो उस वक्त 6 या 7 रुपए शेयर प्राइस था, तो they lost the very big chunk of amount. इसलिए किसी भी मार्केट में किसी भी कंपनी में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी होगी. एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, right? Our financial performance, you can look at the balance sheet, you can look at the cash flow statement, you can look at uh, uh, what P&L of the company. They are the very they are the annual reports. ठीक है, they are the part of the annual report of the company, books of account. But साथ में आपको corporate governance की information knowledge बहुत important है. If you don't have the corporate governance grasp on corporate governance, आप उस कंपनी को एनालिसिस सही से नहीं कर सकते. There was lot of lack in this company, in this bank, corporate governance issues. उसकी वजह से और ये चल रहे थे, काफी टाइम से चल रहे थे. अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो ऑब्वियसली यहाँ तो इंक्रीज हुआ ये, बट इस टाइम पीरियड के बाद से यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि वो सामने फिर वो रिवील होना शुरू हुआ. इज दैट क्लियर क्लास? सुनो. Yes, sir. Yes, sir. In the same way, आप PNB का देख सकते हैं शेयर प्राइसेस. When Nirav Modi fraud was erupted in PNB, right? वहाँ पे शेयर प्राइसेस एकदम से डाउन आए. PNB का शेयर 39 का है. एक टाइम पर इसकी वैल्यू काफी अच्छी थी. मैंने लास्ट ईयर से इन्वेस्ट करना शुरू किया था. आई एम नॉट वेरी श्योर. नाउ लुक एट दिस, 172 वाज द शेयर प्राइस एंड धीरे धीरे ये डिक्रीज होना शुरू हुआ जब ये इंफॉर्मेशन इरप्ट हुई फ्रॉड्स की. तो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि whether वन शुड इन्वेस्ट इन और नॉट. अगर आप बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ऑल टाइम यू विल हैव टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी, यू विल हैव टू फोकस ऑन एनपी ऑफ द कंपनी, ग्रॉस एनपी ऑफ द कंपनी. यानी कि ऑल आई कैन से द शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट्स द ट्रू वैल्यू. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So all we know about the shareholder wealth maximization. Yes, this shareholder wealth maximization does consider every decision. Does it consider the long-term decisions of the company? Yes, it does. For example, आज किसी कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया, 15 साल का एग्रीमेंट. There's an infrastructural companies, for example, if I talk about the L&T, it's on my hit list. I'm just carefully watching the L&T these days because I may start investing in the L&T. Larsen and Turbo is one of the uh, big infrastructure company in our country, right? L&T की बात कर रहा हूँ. तो L&T ने मान लीजिए कोई एक एग्रीमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट, and it may prove a very high valuation to the company, but within 15 years it will not provide you any return before 15 years. आप बोलेंगे सर 15 साल टाइम पीरियड तो बहुत ज्यादा है. लेकिन जैसे ये न्यूज आई
शेयर प्राइसेस कंपनी की इंक्रीज होना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या? what does it show? It shows the share prices market is also discounting the future expectations. Yes or no, class? Market is also discounting the future expectations. Are you getting my point? Yes, Yes. right. So तो can हमेशा you explain this point more, sir? which one? That market is discounting the future Yes, expectations. मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जोमेटो का। और भी अच्छा एग्जांपल है जोमेटो का, इसलिए क्योंकि मैंने इसका सारा फाइनेंशियल्स पढ़ा है पिछले 15 दिन में, एंड इट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। टाइम इन्वेस्टमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सारा टाइम लगाया, तो आई कैन गिव यू द वेरी राइट पिक्चर अबाउट जोमेटो। अच्छा, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। शैल वी मूव अहेड? आगे चलें? Yes, sir. Fine. अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जोमेटो की बात कर रहा हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। Okay, any idea what is the internet access in our country? How many people in our country they use internet in terms of percentage? Internet uses. Any idea? 50%. 50%, 43%, right? If you look at China, it is more than 80%, roughly 80%, roughly 80%. USA, 95%. Okay, next. How many people they order, they how many of Indian they uh, go to restaurants, right, on a weekly basis, on a weekly basis? Any idea how many of percentage? What is the percentage? We may not have any idea, obviously अगर हमने data नहीं देखा। There is 7 to 8% Indians, those who go to restaurants on a weekly basis or fortnight basis or monthly basis। ठीक है, ये it is around 10% basically, if I just figure it out, approximation, it is around 10% fortnight basis, right? In USA this percentage is more than 53%। यूएसए में तो ज्यादातर लोग बाहर ही खाना खाते हैं, आपने उनकी मूवीज एंड उनकी सीजन्स में भी देखा होगा, right? And it is actually a fact, it's a data, 53% they frequently go to restaurants। In China, it is around 45%. I'm not very sure about China, but it is around 45%. Now look at the data. If you look at these data, it simply means India has a very huge potential, or restaurants sector or the food delivery sector has a very huge potential in near future. Yes or no? Yes, sir. सीधा डेटा बता रहे हैं आपको, ठीक है। नाउ जोमेटो का बिजनेस क्या है? अच्छा, जोमेटो का बिजनेस आपको पता है? एनी आइडिया? Yes, sir. बताइए। सर रेस्टोरेंट्स और कस्टमर के बीच में एज अ मिडलमैन काम करते हैं। दे डिलीवर देयर फूड प्लस उनके बाकी वेंचर्स भी हैं, लाइक दे आर ओपनिंग क्लाउड किचन। वेरी गुड, यस। फूड डिलीवरी, देन बीच में उन्होंने जोमेटो गोल्ड भी स्टार्ट किया था। मतलब बाकी वेंचर्स भी हैं बट मेन फूड डिलीवरी है प्राइमरी उनका। food delivery is the B2B business. We all know, sorry, it's B2C. I mistake. It's B2C. You all know what the B2C, business to customer? Yes. Yes. Yes, sir. And their main business arm is B2B. क्या क्या काम हो रहे हैं यहाँ पर? Cloud kitchen, one of the most important of their business, cloud kitchen. Data analytic. Data analytic. What does it mean by the data analytic? जब भी आप कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो आपने देखा होगा, देयर आर सम रेस्टोरेंट्स व्हिच ऑलवेज अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, राइट? एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, राइट? Yes, Yes. sir. Right. And why do this? Because Zomato they charge
इसे इकोसिस्टम मैकेनिज्म भी बोला जाता है. व्हाट दे आर चार्जिंग देयर प्लेस, इकोसिस्टम फीस. भाई जिसका सबसे ऊपर रहेगा ऑब्वियसली लोग उससे ही ज्यादा जल्दी से ऑर्डर करेंगे, और जितना जल्दी आप जिसका ज्यादा ऊपर रहेगा वहीं से ज्यादा ऑर्डर्स रहेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म, राइट. इसके अलावा दे हैव द हाइपर फूड, कुछ ऐसा एक इनका एक नया इनिशिएटिव है, हाइपर फूड. Those who are very health conscious, they only want fully organic food. तो उनके लिए हाइपर फूड किचन नाम से भी एक लाइक they have a concept. इसमें they charge extra from the customer and they provide all those vegetables to the restaurant, which are fully organic vegetables, and they place the order of the fully organic foods. So इसका hyper food baking का business. There are number of business. There are number of, the list is very big, and they also help in the data transfer. They also use the data. अब देखो डेटा क्या इंपॉर्टेंट, व्हाई द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ जोमेटो. दे हैव द लार्ज पूल ऑफ डेटा, right? Whenever we place the order, Zomato knows everything. How many people in an area, how many people in Dwarka are buying, what they are buying in Dwarka, how many are people buy in Palam, what they are buying in Palam, how many in South Delhi, and what they are buying, and how frequently they buy, right? They have each and everything. They know each and everything, right? And when they have the data, obviously they can sell the data to the restaurant unit, right? And the restaurant can exactly place their unit in those areas where the people are buying the product. For example, जैसे example भी है, Jubilant Food का नाम सुना है आप लोगों ने? Jubilant Food. Yes, sir. What is the Jubilant Food? मुझे spelling में थोड़ा सा issue है, शायद यही है Jubilant Food. Yes. हाँ जी बताइए. Sir, Domino's is a Yes. company under Jubilant Foods. Domino's is not a company; it's a brand, right? Jubilant Food Yeah, is it's a brand. Yeah. it's a joint venture basically. तो अब मैं Domino's की बात करूँ, Jubilant Food ने क्या किया? Zomato ने ना Jubilant Food से डेटा बाय किया, डेटा एनालिसिस बाय किया. उन्होंने पूछा कि साउथ दिल्ली या साउथ मुंबई का एरिया था, आई एम नॉट वेरी श्योर, साउथ दिल्ली या साउथ, एक केस स्टडी मैंने पढ़ी थी इस पर. And they ask how many people, what they are actually buying in South Delhi, how frequently they buy, and what is the price range the customers they are comfortable with, right? सारा डेटा इन्होंने निकाला, इन्हें पता लगा सबसे ज्यादा साउथ दिल्ली में लोग बिरयानी कंज्यूम कर रहे हैं, बिरयानी, राइट. एंड जुबिलेंट फूड ने क्या किया, साउथ दिल्ली में अपना एक बिरयानी यूनिट, एक बिरयानी चेन स्टैब्लिश कर दिया. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेम, लेकिन आप एक बार सर्च करना, जुबिलेंट फूड की एक बिरयानी यूनिट उन्होंने दे स्टैब्लिश इन साउथ दिल्ली. यानी कि अब क्या है? हाँ जी. Behrouz. No, Behrouz is, it's a cloud kitchen concept. No, it's Sir, not. I think it is under Zomato only. ये ना Behrouz बिरयानी, राइट? बहरोज जोमेटो के अंडर ही है. हाँ हाँ, वो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है, उन्हीं के अंडर है. हाँ, एक बार हम जुबलेंट का देख ही लेते हैं. व्हाट इज देयर बिरयानी यूनिट? एकदम. हाँ जी, जुबलेंट बिरयानी ब्रांड लॉन्चर एकदम, यस एकदम, इट्स एकदम. हाँ, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा था. इट्स एकदम. आई होप यू कैन सी दिस एकदम, राइट? यस सर. राइट. Yes, sir. तो दे हैव लॉन्च्ड एकदम इन साउथ दिल्ली. क्यों? क्योंकि उन्हें डेटा मिल गया कि साउथ दिल्ली में ज्यादातर लोग बिरयानी ही खाते हैं. नाउ द मेन क्वेश्चन इज नॉट हाउ जुबलिएंट इनिशिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट. द मेन क्वेश्चन इज हाउ जुबलिएंट दे हैव द डेटा, how magnificent, how large data they have, Zomato. जितना ज्यादा लार्ज डेटा होगा इनके पास, उतना ज्यादा वो कस्टमर की नॉलेज, कस्टमर की प्रेफरेंस को, कस्टमर के प्राइसेस को देखकर अपने प्राइस, अपने प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं. दे कैन सेल द डेटा टू अदर काउंटर पार्ट्स, राइट? तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल व्हेन वी लुक एट द Zomato. अब क्या है, ठीक है, ये आपने सारा पढ़ लिया. आप बोलेंगे सर हमने तो प्राइस पूछा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में, आपने तो और कुछ बताया, बट आई एम बेसिकली टेलिंग यू द सेम थिंग बट इन इनडायरेक्ट. ठीक है, जोमेटो के प्रॉफिट्स के बारे में देख लेते हैं.
भाई जोमेटो का प्रॉफिट क्या है? लास्ट 3 ईयर में नेगेटिव. इट मींस दे आर इन लॉसेस, दे आर इन वेरी ह्यूज लॉसेस. इफ आई टॉक अबाउट द पी रेशियो, दे हैव नो पी रेशियो. पी रेशियो तब आएगा ना जब उनका प्रॉफिट होगा. दे हैव नो ईपीएस, दे हैव नो अर्निंग पर शेयर, दे हैव नो ईबीआईटी, पी8. Yes or no, class? Yes, sir. Right. Yes, Still sir. people invested. Still people heavily invested in Zomato. 76 रुपये का शेयर 116 में ट्रेड हुआ, लिस्ट हुआ. लोग पागल हो रहे थे कल बाय करने के लिए. राइट. 40 रुपीज प्लस लिस्टिंग गेन, यानी आप कह सकते हैं मोर देन 50% वॉज अ लिस्टिंग गेन. मोर देन 50%. और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये शेयर 138 हो गया था. within just 5 minutes 130. And because the upper circuit was 139, तो शेयर उससे ऊपर नहीं जा सकता था, तो शेयर फिर नीचे आना शुरू हो गया. Now the question is, you may ask कि सर इतना losses है बिजनेस में, इतना पी रेशियो नहीं है, बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. एंड Amazon has also launched its food category business in Bengaluru. So Amazon might be a very big competitor for Zomato, but still, why share prices are so high? Because of the future expectation कि फ्यूचर में बिजनेस अच्छा काम करेगा विद इन 5-10 years. तो बेसिकली जो मार्केट रिएक्ट यहाँ पे कर रहा है ना, मार्केट इसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है. इज दैट क्लियर? दैट्स हाउ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आर डिस्काउंटिंग द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी. एम आई क्लियर इनफ? Yes, sir. राइट. Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन किसने पूछा था? यस, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सर फ्यूचर वैल्यूज को कैसे डिस्काउंट किया जाता है? Sir, I asked it. ओके, व्हाट्स योर नेम? Yes, sir. Clear. सॉरी. It's clear now, sir. Okay, so I hope these things are very clear to all of us. तो इससे हमें पता लगता है कि कंपनी की फिलहाल अर्निंग नहीं है, कम है. हमेशा मार्केट में जो शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट होते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस प्रेजेंट पास्ट अर्निंग के बेसिस पर होता है. तो ऑल वी कैन से द शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इट इज फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगर आपसे अब एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और you have to allocate the financial shareholder wealth maximization objective, you can explain this example with the help of a lot of with all these things. साथ में आपको कुछ पॉइंटर्स भी बताऊंगा अगर, क्योंकि अभी तो हमने सारा इसको वेग वे में सारा समझा है, बट इसके पॉइंटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ these things considers, I mean how you have to write this answer in your exam. Yes, class? Yes, sir. Okay, sir. तो हाँ, तो अभी तक we talked about financial management, we talked about the objective of financial management. आगे वाली क्लास में, because it's a very first chapter, basic introduction, तो आगे वाली क्लास में next class we will be talking about the different decisions of financial management. I already told you the decision, investing decision, financing decision and dividend decision. इसका सिर्फ एक overview दिया जाएगा next class में. फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. राइट, यानी कि हमेशा टाइम वैल्यू को भी फैक्टर इन किया जाता है. टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अगर 15 करोड़ रुपीज 100 ईयर, इफ यू आर गेटिंग 15 करोड़ रुपीज इन 7 years, so you have to discount the time, you have to convert that 15 crore rupees in present value, and you obviously अगर आपको present value में आएगा तभी आप उसको compare कर पाओगे whether it is beneficial for the company or not. Yes, class? ठीक है. Yes. Yes, sir. तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा. कोई अगर आपके पास डाउट है, देखिए पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि सारी चीजें क्लियर हो जाए. मतलब आई ऑलवेज बिलीव it is always that you should be more curious, you should be more confused when you leave my class. Confused in positive way कि यार ये कैसे होता है, ये भी पढ़ना है, ये भी देखना है, ये चीज होनी चाहिए. And you should always assess yourself when you leave my class, when you enter, कि आज हमने क्या सीखा. It is always the same case is always with me whenever I take your class. When I take any of the classes, I always assess myself: did I really contribute? Did I really teach something meaningful or not? And you should always ask yourself. That's how learning goes. I mean, otherwise we can't do anything productive in class.
अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट होता है, मेरा नंबर आपके पास सबके पास आ गया होगा. You are feel free to contact me anytime. You can leave me message in case if I am not able to take your call, and you may ask anything if in case if any one of you may face a problem कि sir ये वाला concept तो समझ नहीं आया, इसका तो हमें मतलब नहीं पता लगा, तो what I will do, I will provide you some useful links. उससे अगर आपको समझ आता है ठीक है, अदरवाइज मैं आपको फिर अलग से एक्सप्लेन कर दूँ. All I can do is, but I request you please engage in my class all the time, right? ठीक है. Yes, sir. Ritava, have you taken the attendance? Yes, sir. अच्छा, आपने पहले यस बोल दिया. ठीक है, थैंक यू सो मच.